Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.4, right? So I hope you have understood all the 4 exercises that have been done in the previous videos. So the important thing is in this whole chapter to remember the formulas to calculate the respective, you can see surface area. So now you can see as we have done the surface area portion, now it's time to move further towards the volumes, right? So यहाँ पे हम एक नया word देख रहे हैं, you can see volume. So volume क्या होता है वो हम इस you can see वीडियो में समझेंगे. Then we will be able to solve the questions of the upcoming exercise, right? So let us see what actually a volume is, right? So यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट? सो सरफेस एरिया तो हमने क्यूबॉइड का देख ही लिया था इससे पहले, बट अब हम बात करेंगे एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम की, राइट? सो वॉल्यूम क्या होती है? लेट मी जस्ट रीड इट फर्स्ट. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स इन अर्लियर क्लासेस. सो हमने इससे पहले क्लासेस में भी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा हुआ है. सो लेट अस सी. सो रिकॉल that solid objects occupy space. So अगर मैं किसी solid object को लेता हूं, right? So solid object हमें पता है कि कुछ space occupy करता है अंदर, right? That is a solid. So now we can see the measure of this occupied space is called volume of the object. So जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो space वो occupy करता है उसका जो measure होगा वो क्या होता है? Volume होता है उस object का, right? So जो space जो वो occupy करेगा एक solid object उसको अगर हम मीजर करेंगे स्पेस को, सो दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. समझ में आपको? सो लेट अस सी फर्दर. नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट इज सॉलिड देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सच एन ऑब्जेक्ट इज मीजर्ड एंड यू कैन सी इज टर्म्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो अगर आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सॉलिड है, रिमेंबर दिस वर्ड सॉलिड. सो अगर एक ऑब्जेक्ट सॉलिड है देन जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, you can see जो स्पेस वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगा that is measured and is termed as the volume of that object, right? So जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट उसको हम मीजर करते हैं एंड उसे हम क्या नाम देते हैं? वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट? सो नाउ यू कैन सी ऑन द अदर हैंड इफ द ऑब्जेक्ट इज होलो. सो सपोज आपके पास जैसे सिलेंडर है एंड इट इज होलो फ्रॉम इनसाइड. सो अंदर क्या है? सिर्फ एयर है या फिर आप कुछ लिक्विड फिल कर सकते हैं, राइट? सो अंदर सिर्फ आपके पास होलो है. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज होलो देन इंटीरियर इज एम्प्टी. सो उसका अंदर का सारा इंटीरियर क्या होगा? खाली होगा. देन यू कैन सी दैट कैन बी फिल्ड विद एयर और सम लिक्विड. सो हम अंदर उसके क्या कर सकते हैं? या तो एयर फिल कर सकते हैं या फिर लिक्विड फिल कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन सी लिक्विड फिल करेंगे तो वो लिक्विड किसकी शेप ले लेगा? उस कंटेनर की या उस ऑब्जेक्ट की शेप में आ जाएगा, राइट? सो इस केस में यू कैन सी वॉल्यूम जो सब्सटेंस हमने उसके अंदर डाला उसके इंटीरियर में, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन फिल द इंटीरियर. सो वो जो सब्सटेंस हमने डाला है उसके इंटीरियर में टू फिल दैट सब्सटेंस, सो वो उस सब्सटेंस की जो वॉल्यूम होगी जो उसके इंटीरियर को फिल कर देगी उसको हम क्या बोलेंगे? उस यू कैन सी कंटेनर यानी उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी बोलेंगे, राइट? सो अगर आप देख सकते हैं आपके पास सिलेंडर है, सो एज वी हैव सीन द एलपीजी सिलेंडर्स एट आवर होम. सो आप देखते हैं उसके अंदर क्या होती है? एलपीजी गैस होती है, राइट? सो जो उसके अंदर सिलेंडर के अंदर होलो स्पेस है, खाली स्पेस, उसके अंदर हम क्या भरते हैं? एलपीजी गैस, राइट? सो उस सिलेंडर की उस एलपीजी गैस को स्टोर करने की कैपेसिटी बोलेंगे. उसकी वॉल्यूम क्या होगी? कैपेसिटी कहलाएगी, राइट? सो दिस इज अ लिटिल thin line between you can see the difference of volume and capacity. So volume की बात आएगी तब हम क्या कहेंगे? Of solid objects, right? So हमें पता है कि volume क्या होती है? Solid objects जो space occupy करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Volume बोलते हैं, right? Because they are not hollow from inside. अंदर भी filled होते हैं वो. जो जितना space वो घेरेंगे from inside that is known as the volume of that object. And capacity की बात करें तो we can deal about capacity when in the case of you can see hollow objects, right? So जब हमारे पास objects hollow होंगे from inside, खाली होंगे, then we can fill air or you can see some liquid inside. So उनकी जो capacity होगी उन
चीजों को होल्ड करने की. So that is what actually capacity is, right? So you can see the capacity is, you can see the volume of the substance that can fill the interior. So उस substance की volume क्या कहलाएगी? That you can see which can fill the interior of that object is the capacity of that object, right? So कितना hold करके रख सकता है वो, right? So that is the basic difference between volume and capacity. So in brief, I can say if you are dealing with solid objects, you can talk about volume, and if you are dealing with the hollow objects, in that case you are going to deal with the capacity of that object, because we are going to fill some air or liquid inside that object, right? So उस केस में हम capacity measure करेंगे उस object की, not volume, right? So you can see this is what I wanted to share before moving on to, you can see the formula to calculate the volume of a cuboid, right? So now as we know the basic difference between, you can see the volume and you can see the capacity. Now let me just also read the other terms written here. So in short, volume of an object is the measure of the space it occupies. So वो solid object कितना space occupy करता है उसका measure क्या कहलाएगा? Volume. And the capacity of an object is the volume of substance its interior can accommodate. So capacity क्या है? You can see simply the volume of substance, जो बाहर से हम डालेंगे, air या फिर liquid क्या है? Substance है. So you can see volume of the substance its interior can accommodate. So वो object कितना occupy कर सकता है substance की volume को. Getting my point? So जो substance हम उसके अंदर डालेंगे उसकी volume को वो कितना occupy कर सकता है object, that is known as the capacity of that object. So I hope now you understood the basic difference between, you can see, capacity and volume, right? Now both you can see are going to be measured in cubic units, right? So हमेशा volume जो है cube में measure होती है. जैसा कि इससे पहले हमने surface area के बारे में देखा, तो सभी you can see squares में measure होते थे, meter square, centimeter square, but here volume is always going to be measured in cube. Yeah, like meter cube, centimeter cube, liter cube, right? So this is what the basic thing here is. We should know about the volume, right? So now we are going to move further and see how to generate the formula to calculate the volume of a cuboid. So let me first make some space here. So students, now let us generate the formula to calculate the volume of a cuboid, right? So now what I'm going to take here is, you can see a rectangular piece. So यहाँ पे मैंने एक rectangular piece लिया जिसकी length L है और breadth B है, right? So जैसा कि हम इस chapter के starting से देखते आ रहे हैं, we are simply stacking the congruent, you can see, structures, figures one over the other. एक के ऊपर एक stack करते आ रहे हैं. So यहाँ पे मैंने again एक rectangle लिया. We know that in the starting when we dealt with the cuboid, हमें पता है कि cuboid किससे मिलके बनाता है? Rectangle से मिलके बनाता है, right? So we are going to take the rectangle with the length L and breadth B. So हमें पता है कि इस rectangle का कुछ area होगा, that is length into breadth. So let me just take it as A. So यहाँ पे आप देख सकते हैं A area की मैंने एक rectangular sheet ली. Now I have just placed the similar congruent rectangular sheets one over the other, right? So इसके ऊपर इसी A area वाली मैंने sheets बहुत सारी एक के ऊपर एक रख दी. So I have got some structure like this. So आप देख सकते हैं length और breadth तो वही है, but यहाँ पे एक new dimension you can see emerge होके आई, that is the height, right? So जैसे एक के ऊपर एक रखेंगे, so we have got some height like which are stacked one over the other, right? So जब एक के ऊपर एक रखेंगे rectangular sheets को with area A, we will get another dimension which is the height of this, right? So you know that this structure will then be known as cuboid. So अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ये one over the other जो rectangular sheets है, इनका area क्या था? A with length L, B breadth, and we have got new dimension as the height H, right? Now you can see here we are going to talk about the volume. So आप देख सकते हैं ये जो space occupy करेगा this figure which is known as cuboid, so that is known as the volume, right? So this is a solid figure we can see. So if we are talking about the solid figure, then we will discuss about the volume, remember, and if we are going to discuss about a hollow figure, then in that case we are going to find out the capacity of that object, hollow object, right?
So now you can see, suppose we say the area of each rectangle is A. So यहाँ पे हम एक rectangle sheet का area A ले रहे हैं. The height up to which the rectangles are stacked is H. So जिस height तक हमने rectangular sheets को एक के ऊपर एक रखा, वो क्या देगी हमें? The height as H. And the volume of the cuboid is V. So इससे जो हमें cuboid मिलेगा उसकी volume मैंने क्या ले ली? V assume कर ली, right? Now, so the relation between VA and H. आप देख सकते हैं वॉल्यूम, एरिया और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा? लेट मी जस्ट सी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय ईच रेक्टेंगल. सो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल के जो प्लेन यू है, यू कैन सी दिस इज अ प्लेन हियर बिकॉज दो एक्सेस ही दिख रही है आपको यहाँ पे. सो यू कैन सी द एरिया जो इसने ऑक्यूपाई किया इस प्लेन के ऊपर बाय द ईच रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा इनटू में जो हाइट है, यू कैन सी. सो एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया इनटू में हाइट. सो एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया में क्या आता है? लेंथ और ब्रेड्थ आती है. सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज व्हाट एक्चुअली एरिया इज. सो अब इसे एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इनटू में हाइट is going to be, you can see this is the length here, this is the breadth, and you can see then this is the height, right? So together when these three dimensions are multiplied, you can see, so length into breadth is simply the area, right? So here I have written that area into height is equal to the measure of space occupied by that cuboid, right? So अगर मैं area यानी कि length into breadth और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? हाइट से. सो अगर मैं एरिया और हाइट डायमेंशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? यू कैन सी द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट. सो कितना स्पेस वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है वो आ जाएगा, राइट? हियर द ऑब्जेक्ट इज क्यूबॉइड. सो द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर शीट इनटू में हाइट up to which the rectangular sheets are stacked one over the other. So now हमें पता है एरिया क्या होता है? That is simply length into breadth, right? Then multiply by this dimension height. You can see this will be then the volume. You can see V, which we have to calculate of this cuboid, right? So this is the formula which help us to calculate. You can see the volume of any object, right? Or you can say cuboid here, especially, right? So for calculating the volume of a cuboid, we are going to apply the formula length into breadth into height, right? Now, as I have told you that always the volume is going to be measured in cubic unit, right? So यहाँ पे आपके पास either meter हो, centimeter हो, that will be in cube, right? Right. So this is how we are going to find out the volume of a cuboid. That is length into breadth into height. And you can see the volume will be in cubic units. So that was all about the volume of a cuboid. So students, now let us move further and talk about the volume of a cube, right? So जैसा कि हमने इससे पहले cuboid की volume देखी, which can be calculated by length into breadth into height in cubic unit, right? So now let us see what formula will be helping us to find out the volume of a cube, right? So we know that a cube looks something like this, which is made up of square, right? और हमें पता है कि square की चारों sides क्या होती हैं? Equal होती हैं. So we know that also of a cube, all the edges are going to be of same length. Suppose if the length of the side of a cube is A, so सभी sides कितने की हो जाएगी? A unit की हो जाएगी, right? So now you can see when we measure the magnitude of the region of space, that is the space occupied by a solid, we do so by counting the number of cubes of edge of unit length that can fit into it exactly. So suppose आप अगर मैं day to day life की बात करूं, so you have seen when we go to measure some plot where we can build a house, so हम जब भी कोई plot देखने जाते हैं, so हम हमेशा उसके अंदर देखते हैं कि कितने क्यूब जो है वो फिट हो सकते हैं ऑफ यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स उस प्लॉट के अंदर फिट हो सकते हैं, राइट? दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी मेजर द प्लॉट. यू कैन सी हाउ मच space does the plot occupy, right? So now you can see whenever we go to measure, you can see a space occupied by a solid, so we do so by counting the number of cubes of edge of unit length. So जिनकी साइड क्या होगी क्यूब की? 1 unit होगी, right? So you can see इस तरीके से हम देखते हैं कि कितनी क्यूब्स जो है यूनिट लेंथ की फिट होंगी एग्जैक्टली उस स्पेस के अंदर, राइट? दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी मेजर
a plot, right? Size of the plot, right? So you can see therefore the unit of measurement of volume is cubic unit. इसीलिए जो measurement होता है volume का, that is in cubic unit. That's why this is the reason behind, right? So क्योंकि हम हर plot, अगर suppose for example plot का भी measure करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने cubes जो है of one unit length fits into those plot, right? So now talking about the volume of a cube, हमें पता है कि सभी sides यानी कि सभी edges जो हैं वो क्या है a यूनिट की है, सेम होती है लेंथ. सो यू कैन सी side into side into side, so length of the edge into edge into edge, right? That is, you can see a into a into a, that will be a cube, right? So आप देख सकते हैं सभी, आप देख सकते हैं जो sides हैं, edges हैं, वो क्या है a ही है. So a into a into a, that will be a cube. So volume of cube exactly calculated by simply हम क्यूब कर देंगे उसकी गिवन साइड का. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब की साइड कितनी है a. सो हम यहाँ पे a का क्यूब कर देंगे सिंपली. दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, दैट इज a क्यूब, राइट? और यू कैन ऑल्सो से एज क्यूब, दैट विल बी ऑल्सो फीजिबल, राइट? सो a क्या है यहाँ पे द एज, और यू कैन ऑल्सो से द साइड ऑफ अ क्यूब, राइट? नाउ सो इफ अ क्यूब हैज एज ऑफ 12 सेंटीमीटर, नाउ सपोज if you are given let me just take an example. so अगर आपको यहाँ पे given है कि साइड जो है क्यूब की वो कितनी है 12 सेंटीमीटर. सो आप देख सकते हैं सभी 12 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, that is known to us. so यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है to calculate the volume of a cube having the side as 12. so that will be, you can see 12 into 12 into 12, right? so यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है आपके पास 12. so यहाँ पे a क्यूब कर दीजिए या फिर a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, that is up to you, right? तो यहाँ पे a का क्यूब कर दीजिए, और यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द साइड 3 टाइम्स, राइट? सो दैट विल गिव यू कैन सी 12 into 12 into 12, that will be 1728 centimeter cube. Remember always the volume is calculated in cubic units, that I have told you many times now, right? So this is the formula to calculate the volume of a cube, that is a cube, or you can also say side cube or edge cube. So that was all in this. So students, now as we seen the formulas to calculate the volume of a cuboid as well as a cube, which are respectively, you can see length into breadth into height in cubic units, and a cube, or you can say edge cube, right? So let us see the examples based on these formulas, right? So we are going to see how to actually apply the formula to calculate the volume of the respective figure, cuboid or a cube, right? So let us see an example here. So यहाँ पे आपके सामने मैं एक example ले रहा हूँ, example number 11, which is, you can see a wall of length 10 meter was to be built across an open ground. So यहाँ पे एक open ground के ऊपर हमें एक wall बनानी है जिसकी length कितनी होनी चाहिए 10 meters, right? So this is the length given to us. So let me first start off the solution with the given thing. So यहाँ पे given क्या है? The length of wall, that is L here, right? Which is 10 meters, right? Now let me just see further in the question. So यहाँ पे height given है of the wall is 4 meters, right? So अगर मैं यहाँ पे एक rough diagram बना के दिखाऊं आपको, so you can see यहाँ पे एक wall है something like this, right? So ये एक wall ले ली मैंने, right? So यहाँ पे ये मुझे ground के ऊपर बनानी है wall. So यहाँ पे ये जो length है wall की, so this is going to be the length here, which is 10 meters, right? So हमें length given है wall की. Also you can see the height of this wall is given to us as, you can see 4 meters, right? So यहाँ पे 4 meter जो है height बनानी है इस wall की. Now if this wall is to be built up with bricks, so यहाँ पे bricks का ईंटों से बनानी है ये wall, definitely they are going to be made up with bricks like this. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से bricks लगेंगी to make the wall, right? So something like this will how the bricks are going to be placed. So इस तरह से bricks लग जाएंगी आपके सामने है. So now you can see एक brick की जो dimension है, अगर मैं एक you can see brick की जो figure होती है actual में, that is a cuboid. You know very well, right? So brick किस shape की होती है, किस figure की होती है, of a cuboid, right? So यहाँ पे हमें उसकी length, breadth और height given है, right? So this is the dimension of a brick. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी length कितनी given है हमें, that is 24 centimeter, right? So this is, you can see the length. Then आपके सामने breadth भी given है, that is 12 centimeter,
and then the height is given to us as 8 centimeter, right? So this is the dimension of a brick. Now how many bricks would be required? So हमसे पूछा गया कि कितनी bricks लगेंगी so as to complete this wall, right? So यहाँ पे सबसे पहले हम wall की बात करेंगे. So हमें length of the wall given थी L, that is 10 meter. Also the height of the wall, that is H, that is given to us as 4 meter. Now अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे thickness जो है इस wall की, so this thickness you can see this is how a wall is placed. So यहाँ पे thickness भी होगी कुछ wall की. So वो कितनी given है आपको यहाँ पे 24 centimeter. Now आप देख सकते हैं length, this thickness, or you can also say it as the breadth of this wall, right? Thickness बोल लीजिए या breadth बोल लीजिए, that is going to be the same thing, right? So अब आप देख सकते हैं यहाँ पे breadth भी given है, length भी given है, also the height, right? So अब आप देख सकते हैं ये wall जब बन जाएगी तो ये कुछ area occupy करेगी. It will occupy some space, right? So हम यहाँ पे इस wall की क्या निकालेंगे? Volume निकालने वाले हैं, right? Because it is occupying some space. So ये सभी bricks क्या हैं? Solid हैं. So we know that in case of solid, we are going to find out the volume, right? So brick is a solid figure. So we are going to solid object. So we are going to find out the volume here. So सबसे पहले यहाँ पे thickness जो given है मैं लिख लेता हूँ. So the thickness is given to us as 24 centimeter, right? Now अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो brick given थी उसकी dimensions में सेंटीमीटर था, ये thickness भी सेंटीमीटर में, but length और height जो है wall की वो meters में. So we have to first convert them into centimeter. So हमें पता है कि 1 meter में 100 centimeters होते हैं, right? So to convert meter into centimeter we have to multiply by 100, but to convert centimeter into meter we have to divide it by 100. So हमें यहाँ पे क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर में करना है. So that means we have to multiply by 100. So यहाँ पे मैं 10 को किससे multiply कर दूं? 100. That will be 1000 centimeters, right? So ये 10 मीटर में कितने होते हैं? 1000 centimeters. So this is going to be the length of this wall, or you can write it in, you can see centimeters like this, right? So यहाँ पे height जो है that is also given in meters. So 4 को भी मैं किससे multiply कर दूंगा? 100 से. So that will be 400 centimeters. So you can also write it as 400 centimeter, right? Now thickness, or you can see the breadth, is already in centimeter, right? So we know how to calculate the volume. So let us now find out the volume of wall. That will be length into thickness, or you can see the breadth into the height. So we know the formula, the L into B into H. I have told you. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये cuboid की structure में होगी ना wall, because the brick is in the form of a cuboid, right? So now let me just put the length here. So that is 1000 into the thickness is 24, the breadth, or you can say then the height is 400, right? So let me just count the zeros here. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 zeros. Now let me just multiply 24 by 1. So 24 1 ja 24, then 24 into 4. So let me just check out 24 4 ja. So 4 4 ja 16, 1 carry, 4 to the 8, and then 1 9. So that will be 9 6 1 2 3 4 5 5 times 0. So that will be in centimeter cube, right? So this is going to be the volume of this wall. That means the space occupied by this wall is going to be 965 times 0. So 96 lakh centimeter cube, right? Now we have to find out the number of bricks. So यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ. मैंने आपको पहले भी बताई है कि कभी भी हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी निकालनी होती है, नंबर ऑफ समथिंग. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एनीथिंग, राइट? सो जब भी हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है. सो हम क्या करेंगे, इस पूरी जो वॉल है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. सो एक चीज से जो जिससे वो बना है. सो पूरी वॉल की वॉल्यूम को मैं एक ब्रिक की वॉल्यूम से डिवाइड करने वाला हूं, राइट? सो पूरी वॉल की वॉल्यूम जो मैंने यहां पे निकाल ली है उसको किससे डिवाइड करूंगा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. सो ब्रिक मुझे पता है क्यूबॉइड में है. सो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैसे निकलती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि मुझे यहां पे गिवन है ब्रिक की, राइट? सो आई एम गोइंग टू सिंपली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक and then simply divide the volume of wall by that volume of one brick. So that will give me the number of bricks used to make this wall, right? So this is a basic formula. You can see a logical thing which is going to be used every time you will get
to find out the number of something, right? So let me just now rub this and move on into this question. So if I just rub this now, so now what we are going to do is simply find out the volume of one brick. So that will be, again you can see L into B into H in centimeter cube, because all the dimensions are in centimeter. So यहाँ पे length कितनी है आपके पास, that is 24 into, you can see यहाँ पे breadth कितनी है 12 into height कितनी है आपके पास 8, right? So now if you are going to multiply this, so 24 into 12, let me just check out. So 2 4 is 8, 2 2 is 4, so then 1 into 24 will be 24. So यहाँ पे 8 8 and 2 288, right? So now we are going to multiply it by 8. So let me just check out. So 8 8 is 64, 6 carry, 8 8 is 64 plus 6, that will be 70. So 8 2 is 16, then 16 plus 7, that will be, you can see 23, right? So 2304. So that is going to be, you can see the volume of one brick, right? Now, as we know that, also I have told you that we have to calculate the volume of, the number of bricks, right? So यहाँ पे हमें number of bricks find out करना है. So number of bricks will be calculated by dividing the volume of wall by the volume of one brick, right? So यहाँ पे आप इन values को रखने के बजाय, let me just tell you, अगर आप इसको रखेंगे जो कि इनके factors हैं, तो आप easily solve कर पाएंगे, right? So आप देख सकते हैं volume of wall की जगह मैं ये ना रख के ये रख दूं, बात एक ही है. So I'm going to place this. So 1000 into 24 into 400. आप देख सकते हैं इसका multiply बनेगा तो यही ना. So इसकी जगह पे मैंने इनके factors रख दिए, right? Then you can see volume of one brick 2304 की जगह ये रख देता हूँ. So that will be the same thing. So अब यहाँ पे आप इसको reduce कर सकते हैं. आप देखिए 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 and a 0. So आप देख सकते हैं 8 के टेबल में 450 पे जाएगा. Then 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, right? So दोबारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So 2 12 जा 24. So अब यहाँ पे 12 आ गया. Now what we have to do is simply again reduce it at the table of 2. So 2 6 ja 12, 2 5 ja 10 and 2 zeros, right? Again you can see at the table of 2. So 2 3 ja 6, 2 25 ja 50 and a 0. So यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, ऊपर 250 into 50 हो जाएगा, right? So let me just solve this. So 250 into 50 divide by 3, right? So now what we are going to do is simply multiply this. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 zeros आएंगी as it is. So 25 5 ja 125 divide by 3. Now let me just check out that exactly it is going or not. So if I just divide this, so 3 4 ja 12, then you can see 3 1 ja 3, remaining 2, right? So that will make 20. So 3 6 ja 18, again 2 remaining. So that will make 20. Again 3 6 ja 18, 2 remaining. Then a decimal. Then you can see how much will be remaining here. So if I just count on, so you can see 3 6 ja 18, 2 remaining. Then a decimal 20, 3 6 ja 18. So on. You can see that will be moving on. So approximately this number of, you can see, bricks is going to be required here to make this wall, right? So let me just cross check the answer here. So you can see it is exactly the correct answer. You can see 4166 bricks are going to be used here. So you can see हमने यहाँ पे approximately लिया, आपके पास क्या था 4166.6. आप divide करेंगे जब 12500 को 3 से, so you will going to be get this. So यहाँ पे point मैंने, you can see negligible होता है, so you can see I am going to take the approximate value, that is 4166. So 4166 bricks are going to be used here to make this wall, right? So quite an important question. This is how we are going to get the questions in the exercise as well, right? So आप इस questions को अगर ध्यान से solve कर लेंगे, so you will be getting easily solving all the questions you are going to get. So that was all in this example here.